Good everyone, welcome to the NTV and you're watching NTV News at 9:30, source for exclusive news and entertainment. This is Pranita bringing you to the top stories from India and around the world, and the time is exactly 9:30. Following a series of recent accidents across Odisha, Amabus service, authorities conducted a thorough inspection in Puri today. The checking took place at Maltipatpur Chakka in Puri, mirroring a similar inspection carried out in Bhubaneswar. Sources indicate that the Transport Department organized a special drive targeting Amabus operation. During this inspection, officials meticulously examined vehicle documentation, fitness certificates and driver's license. Additionally, driver underwent tests to ensure they are not consume any intoxicant substance, which breathalyzer checks conducted for alcohol consumption. Regional Transport Officer Susmita Behra confirmed that all vehicle documents were found in B order. She also stated that no driver were found to be under the influence of drugs. The inspection was overseen by Motor Vehicle Inspector Bibhuti Ranjan Naik and Junior Motor Vehicle Inspector Damayanti Mahali. जदि आप सलमान खान मैटर जदि जजमेंट को पढ़ी से जजमेंट रे माननीय सर्वोच्च न्यायालय कही कि जे भी एमती किसी कार्य करुछि जे जहाँ कहार डेथ हो पारे जमीती जदि आप मद खाई गाड़ी चलेबे तो आप जानी कि मोर विवेक उपरे मोर सब इंद्रिया उपरे मोर कंट्रोल नहीं तो मोर हाथ रे गाड़ी अच्छी तो क्या जदि धक्का हेले से मरी जाई पारंती तो से सब मैटर रे 105 अनुसार केस ही परे परे से केमिति गाड़ी गड़ीला रेड लाइट रे भी एंड लोक चापी है कि मरी गले तो से विषय रे तांको पचारुथिली कि माने एई भलिया सिचुएशन हेले कोन करूछंती से विषय रे तांको पचारुथिली स्पेसिफिकली हमर जते कि भी एनफोर्समेंट स्क्वाड अछंती से माने ड्राइवर पूरा सब ड्राइवर रिलेटेड सब चेकिंग करिवे तार सब ठीक अछि कि नहीं एवं जे हमर टेक्निकल टीम अछंती से माने गाड़ी रा सरप्राइज चेकिंग कर Doctors in Odisha have intensified their protest, leading to 2-hour suspension of outpatient department service across government medical colleges and hospitals statewide on Monday. The OPD services were held from 9 am to 11 am as doctors continued their agitation over long-standing demands. A key demand is urgent filling vacant doctor position with the state. The Odisha Medical Service Association is representing and the protest previously. The association had conducted 1-hour OPD shutdown. However, citing an unsatisfactory response from the government, they decided to extend the suspension 2 hours. During this period, doctor did not attend the patient in OPDs. Through emergency service remained fully operational. OMSA is calling for immediate action to fill sanctioned vacant posts, highlighting the increased workload to existing and medical staff due to the shortage. The association has issued warning if the government does not take concrete steps to address their demand. By January 14, OPD services could face a 2-hour suspension during both morning-afternoon session in the coming day. A doctor-involved protest stated when the OMSA president and the secretary had previously informed the government about the issue, proper attention should have been given and solution developed since our demands were not met. We are left with no alternative but no escalate. प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ लॉ आउ फाइनेंशियल मेंबर अच्छा विचार चली प्रथम बैठक सरलानी दुईटा दाबी भितर गोटे पोस्टमार्टम सेंटर इश्यू थिला जो कि 500 टका से पाते 1000 टका करने आम एग्री हो तार भी प्रोसेस चली सहित डेंटल डॉक्टर मानकर पीजी ये जो बढ़ाई दुईटा सर्ट टर्म दाबी आम मानि भी नहीं सहित गोटे गुरु दायित्व रही रोगी सेवारे से मोर सहित भी 3 थर 4 थर कथा भी होती तो मुझे आपण माध्यम पुणी थे अपील करी जे डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड आपण माने निज प्रोफेशन को सम्मान जनाई कार्यक्रम रे रोगी सेवा कार्यक्रम रे जोग दियंतु एवं गणतंत्र रे एवं कौन सी भी परिस्थिति रे अक्रॉस द टेबल डिस्कशन होकर समस्यार समाधान होता है एवं से आउ थे अनुरोध करी आपण
समाधान बाट को आम सहित कथबार्ता हेबारे आसंतु एवं आपणक द्वारा रोगी हंतसंत हेले एवं जदि रोगी सेवारे व्याघत हेबे तो निश्चित भाव में समस्त मन में कष्ट देव। तो मु आउ थरे अनुरोध करुछि आपण माने कार्य रे जोग दियौ। A significant fire occurred last night in Chhatrapada village located with the Narendrapur Panchayat of Tigidi block district. The blaze caused widespread damage. According to report, 10 rooms belonging to 7 families were destroyed, resulting in the loss of their homes and possessions. The fire also tragically claimed the life of 10 cows and over 100 goats. Additionally, more than 100 bags of paddy were consumed by the flames, severely impacting the livelihoods of the affected families. The precise cause fire is currently under investigation. Upon receiving notification of the incident, the fire brigade swiftly responded to the scene and successfully extinguished the fire, adverting further escalation for the damage. While an official assessment, total loss is pending, and affected families are facing considerable hardship. The unfortunate event has left Niramis family without shelter and struggling to cope with the loss of their livestock and crops. सब छोटा के हमें उठी देखला बेलकू घर पड़ी गलनी नागी गलनी उठी कौन आ कि छावाई के छना घर लोक को जाना से घर भीतर निया नागिले ए बेला हम किछि गोटे जिनिस काढिनु बाबा सब पड़ी जाईछि डॉक्यूमेंट पर्यंत सब पड़ी जाईछि किछि नाही सुना पुअर चैन मुदी बोर कान फुल चूड़ू सब पड़ी जाईछि राती 2:30 परे निया आसीछि कोठु आइला किमति आइला हमें कोइ परिबुनी आमर निद भांगिला से ऊपर निया पूरा एमती कंट्रोल करनी तलू घर छाड़ी आम पलि गलु आमर जहाँ बिछना पत्र आसवा पत्र सब ध्वंस हो जाइए किसी ना गोटे सान भाई ता झील बाहर कर जिन सब पाई निया लगे के जोर निया रात्रि में जोर जोर निया में निदर उठिला निया लगी जाइलानी। The Supreme Court today denied bail to Umar Khalid and Sarjil Iman in the Delhi riots alleged conspiracy case. The court found that evidence presented prima facie indicate their involvement under the Unlawful Activities Prevention Act 1967. However, the court granted bail to other individuals accused in the same case. Gulfisa Fatima, Mira Haider, Sifa, UR Rahman, Mohammad Salman Khan and Sahib Ahmed. Regarding Khalid and Iman, the Supreme Court stated they may reply for the bail after protected witness have been examined or after 1 year from today's date. The court noted the prosecution materials prima facie suggestion central and formative role and involvement in planning, mobilization and strategic direction extending beyond episodic and localized act. Justice Kumar delivering the judgment emphasized in the treat under Unlawful Activities Prevention Act. Delay do not automatically and override statutory safeguards. The court also clarified the section 43D5 of the UAPA does not entirely prevent judicial review determine if a prime facie as exists a judicial certainty to be conducted and accuse specific bias. At the bail stage, defense arguments are not to be excessively examined. The court is required to conduct a structured inquiry to ascertain the prosecution evidence. If accepted, the provision also cover act described essential service and threaten the economy, in addition to causing death or destructions. जो भी उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया है रिकॉर्ड के आधार पर फैसला किया है उन्होंने बाकियों को बेल दी है इन दोनों को बेल नहीं दी तो मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड में ऐसा होगा जो इनका केस दूसरों से जुदा लगता है मगर आज देश भर में जो उम्मीद थी कि इनको बेल मिलेगी आज कई लोग इससे नाखुश होंगे क्योंकि जो संविधान की आस्था है वो फ्रीडम में है और लिबर्टी में है इतना लंबे अरसे के बाद बेल ना मिलना इससे एक चिंता का वातावरण तो पैदा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई 5 साल तक जेल में है इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बेल मिलना चाहिए और इसी बेसिस पर उन्होंने कहा कि अपराध के ब्याह पे उनको जेल में रखा जा रहा है बाकी को बेल दी जा रही है। अपराध तो अभी साबित नहीं हुआ
और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि जब एक आदमी बिना कन्विक्शन के लंबे अरसे से जेल में है उसकी रिहाई बेल पर होनी चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। तो अब क्या देखकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, ये तो इस पर तो टिप्पणी तभी हो सकती है जब पूरे जजमेंट का अध्ययन हो, जिस पर कुछ समय लगेगा। जिन 5 को बेल दी है हम लोग बहुत खुश हैं उनके लिए कि उनको 5.5 साल के बाद बेल मिली है और जेल से बाहर आने का मौका मिलेगा। जिन 2 लोगों को बेल नहीं मिली है, उमर खालिद शर्जील इमाम, उनको लिबर्टी दी गई है कि 1 साल बाद वो फिर बेल के लिए अप्लाई कर सकें। Let's take a break. We will be back soon. काका। हाँ बेटा। ये जश्न कैसा? आज इस गांव को 4 चांद लग गए हैं। कैसे? ये सब कृष्णा का कमाल है। अब हम पूरी दुनिया से जुड़ गए हैं इंटरनेट के जरिए। सच? वो देखो, कॉमन सर्विस सेंटर। बिल्कुल डिजिटल इंडिया के तहत अब शहर के चक्कर काटे बिना रोजमर्रा के छोटे बड़े काम गांव-गांव से हो सकते हैं। ये देखो, ढेर सारी सुविधाओं के जरिए, जैसे कि बैंक अकाउंट खोलकर पैसों का लेन देन करना, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कराना, आधार कार्ड या पासपोर्ट बनवाना, पैन कार्ड की अर्जी भरना, जमीन के कागजात या जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना। और प्रधानमंत्री डीजी साक्षरता योजना के अंतर्गत सीएससी अधिकारी को प्रशिक्षण देकर दूसरों को पढ़ाने के लिए तैयार करते हैं। एक और खुद का सेंटर चलाने का अवसर मिला और दूसरी ओर लोगों को रोजगार। लेकिन इस सेंटर को चलाता कौन है? कृष्णा। अरे भाई, ये कृष्णा कौन है? गांव की प्रगति का श्रेय जाता है हमारी प्यारी बिटिया कृष्णा को। डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। Welcome once again. The Madhya Pradesh High Court has ordered municipal authorities to provide additional water tankers and maintain indoor reputation following a public interest petition regarding deaths linked to the water contamination. This comes despite Indore being recognized India's cleanest city due to its sanitation efforts. However, the city image has been tarnished by a grim reality of several resident deaths and numerous hospitalizations due to the toxic water. Investigation suggests these facilities are a result of institutional inaction and public indifference, which allowed a developing issue to escalate a public health emergency. A report from the State Pollution Control Board dating back to 2016 to 2017 had previously identified instances where sewage mix and drinking water source in Bhagirathapura and 58 other locations across Indore. Bharatiya Janata Party Corporator Kamal has claimed previously wrote to municipal body about replacing water pipe in Bhagirathapura, but no action was taken. The official death toll currently stands at 10 with 100 hospitalized, highlighting the impact of the official neglect. पूरा में निरंतर हमारा सर्वे का काम चल रहा है, प्लस हमारा जो दूसरे टैंकरों के माध्यम जल प्रदाय का कार्य वो चल रहा है, उसको भी देखा गया। और यहाँ पे बाकी चैम्बर की सफाई, साफ सफाई, सैंपलिंग होना, जो हमारी टेस्टिंग हो रही है, क्लोरिनेशन होना, जो हमारे बोरवेल है, इन सभी पे लगातार काम चल रहा है और उसी का अवलोकन भी किया गया। लोगों से बात भी की गई है। हम लोग सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग उबला हुआ पानी, जो पानी है उबाल कर पिए, उसको हमारे टैंकर का जो माध्यम से पानी प्रदाय किया जा रहा है उसका ही उपयोग करें। तो सारी चीजें बताई जा रही हैं, उसी को फिर से बताया गया। और जो बोरिंग जो थे, जिनको हम लोगों ने क्लोरिनेट किया था, कल डोज किया था, डोजिंग की थी, उनको अभी सबको चालू भी कराया जा रहा है, ताकि जो पानी के अलावा जो उपयोग है, मतलब लोग उस पानी का उपयोग कर सकें, ताकि लोगों का सुविधा जो हो रही है वो ना हो। और बाकी सैंपल की जो कार्रवाई वो चल रही है। कल लगभग रिंग सर्वे में हम लोगों ने 5000 से ज़्यादा घरों का सर्वे किया है और
इसमें 65 लोग हमको ऐसे मिले जिनके अंदर माइल्ड सिम्टम थे उल्टी दस्त से रिलेटेड, तो उसमें से 17 लोग को हमने एडमिट भी किया है, उनका उपचार भी किया जा रहा है। वर्तमान में कुल 149 लोग अभी अस्पतालों में उपचार लाभ ले रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इन सभी लोगों को अच्छी सुविधा बिना किसी शुल्क के हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और निरंतर जो मरीज हैं उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। मरीज बड़ी संख्या में डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, तो जो डिस्चार्ज होते हैं तो ये कंट्रोल रूम के माध्यम से उनके फॉलोअप भी किया जाता है ताकि उनको डिस्चार्ज होने के बाद किसी प्रकार की सुविधा ना हो। और जो हमारी ग्राउंड टीम है वो भी रेगुलरली उन मरीजों के साथ जो डिस्चार्ज होकर आ रहे हैं। Ashaman, part of northeast India, was shaken by magnitude 5.1 earthquake this morning. The earthquake occurred at 4:17 a.m. The National Center of Seismology, the government nodal agency for monitoring seismic activity, reported the epicenter was located near Assam Morrigan district. Tremors were felt across central Assam, including Morrigan and surrounding area. Residents reported feeling the shaking and some rushed out of their homes. The event occurred amidst cold and foggy condition. The earthquake epicenter situated along the Kopil fault line, area known as past seismic activity. Currently, there are no immediate report of casualties or damage to property. Northeast India, including Assam, is situated one of the country's most seismically active regions. A leader of the Aam Aadmi Party has been fatally shot while attending a wedding ceremony in Amritsar. Police report that the victim, identified as Singh from Balota village in the Tarn district, was at event when unidentified individual approached and fired upon him at close range. Singh sustained a gunshot wound to the forehead. He was immediately transported to the local hospital where he was pronounced deceased due to his injuries. Authorities have secured the scenes and collected CCTV footage, are investigating at eyewitness. A searching operation is underway to identify and apprehend the perpetrators. ਮੈਰੀਗੋਲਡ ਪੈਲੇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਰਮਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੋਕੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਨ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਫਤੀਸ਼ ਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। New Delhi wakes to foggy condition. Air quality remain in poor category. Flight delay. Residents across several major Indian cities including Delhi, Mumbai and Guwahati were greeted by the thick blanket of fog this morning. In the national capital, air quality ranged from poor to very poor in various areas, leading to the flight delay and Indira Gandhi International Airport. The Central Pollution Control Board reported Delhi air quality index at 260 by 8 am on today, classifying it as poor. Visual as Akshardham indicate an air quality index of 294. It also poor category. According to CPCB data, the ITO area recorded air quality index of 256, designated as poor, while Anand Bihar saw a sharper decline to 320, placing in it very poor bracket. Chandni Chowk was among the most affected with an air quality index of 337, falling under the very poor classification. The reduced visibility caused by fog and smog led to disruption in flight operation at Delhi Indira Gandhi International Airport, with several flights experiencing delay in early hour. Meanwhile, Mumbai also experienced hazy condition. Image from Bandra Kulla complex, Bandra reclamation and the showed visible layer of smoke over the city. However, authorities are urging citizens to continue adhering strictly to guidelines under stages 1 to 2 of the GRAP to prevent any further deterioration in air quality. Let's take a break. We will be back soon.
हाँ बेटा, ये जश्न कैसा? आज इस गांव को 4 चांद लग गए हैं। कैसे? ये सब कृष्णा का कमाल है। अब हम पूरी दुनिया से जुड़ गए हैं इंटरनेट के जरिए। सच? वो देखो, कॉमन सर्विस सेंटर। बिल्कुल। डिजिटल इंडिया के तहत अब शहर के चक्कर काटे बिना रोजमर्रा के छोटे बड़े काम गांव-गांव से हो सकते हैं। ये देखो, ढेर सारी सुविधाओं के जरिए, जैसे कि बैंक अकाउंट खोलकर पैसों का लेन देन करना, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कराना, आधार कार्ड या पासपोर्ट बनवाना, पैन कार्ड की अर्जी भरना, जमीन के कागजात या जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना। और प्रधानमंत्री डीजी साक्षरता योजना के अंतर्गत सीएससी अधिकारी को प्रशिक्षण देकर दूसरों को पढ़ाने के लिए तैयार करते हैं। एक और खुद का सेंटर चलाने का अवसर मिला और दूसरी ओर लोगों को रोजगार। लेकिन इस सेंटर को चलाता कौन है? कृष्णा। अरे भाई, ये कृष्णा कौन है? गांव की प्रगति का श्रेय जाता है हमारी प्यारी बिटिया कृष्णा को। डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। Welcome once again. President Donald Trump has suggested that the United States may impose new tariff on India due to its continued oil imports from Russia. Speaking to the reporter on Air Force President, Trump stated that Indian Prime Minister Narendra Modi was aware of dissatisfaction. Prime Minister Modi is a very good man. He is a good guy. He knew I was not happy. Trump said it was important to make me happy. They to trade, we can rise tariff on them very quickly. Last year, the US implemented as 25% tariff on India, with an additional 25% penalty for purchasing Russian oil. The brought total duties some categories to 50%, significantly impacting relation between New Delhi and Washington. The latest comment come US and India negotiator began new round talk aimed at resolving the ongoing trade disputes. Earlier, President Trump had also threatened new tariff on India rice, following a complaint at a White House redundant and about dumping practice by India, China and Thailand. He questioned why India was permitted to engage such practice without facing tariff. When informed that trade deal was being negotiated, President Trump unmarked India shouldn't be doing that. We will get it settled. Tariff solved the problem in 2 minutes. Negotiation between India and US to resolve this tariff issue have been challenging. Washington is seeking reduced import duties on American agriculture product, while New Delhi remains committed to safeguarding its domestic farming and dairy industries. Modi's a very good man. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade. And we can raise tariffs on them very quickly, and it would be very bad for them. All of them say you told me you weren't very thrilled. And I'll tell you something, the Russian economy is lousy. But what's really lousy is the Venezuelan economy. The Venezuelan economy is, I think, the worst economy I've ever seen. If you look at inflation, things are doubling every day. It's a disaster. We got to fix the country fast. The Surprise comedy focused on radical politics, one battle after another, has been named Best Pictures at the 31st Annual Critics' Choice Award. One Battle After Another, a 2025 American black comedy action thriller, was written, co-produced and directed by Paul Thomas Anderson. The film draws loose inspiration from Thomas Shackel's 1990 novel Vineland. It features cast including Leonardo DiCaprio, Sin Pena and Charo, Regin Hall, China Taylor and Chase Infinity Paul. Thomas Anderson also received accolades and the Best Director, Best Adapted Screenplay for the same film. Guillermo del Toro, Frankenstein, secured 4 awards including Best Supporting Actor for Jacob Elordi's performance as the creature. Adolescence, a narrative modern investigation presented in the single continuous shot, also garnered 4 awards, including Best Limited Series. The series also swept the Limited Series acting categories with Stephen Graham, Vivian Cooper and the Erin Joffrey
or wins Critic Choice Award. The Pete was recognized was Best Drama Series, with acting award going to Noah Wyle and Karathin Lashana. Meanwhile, the studio took home awaited Best Comedy Series. Seth Rogen and the honored with Best Actor's Comedy Series, and his co-star like Barry Holtz won Best Supporting Actor in Comedy. Joe Root, a cornerstone of England batting, has once again demonstrated his prowess in SS. He has now drawn level with Ricky Ponting of third place on the all-time men test centuries, reaching his 4100 on day 2 on the Sydney Test. Root 41-test century match Ponting total achieved in fewer matches. Ponting completed 41 century over 168 tests between 1995 and 2012. Root meanwhile reached the milestone in 163rd Test appearance, having debuted against India in Nagpur in December 2012. The century also marked the first international 100 of the 2026 calendar year. This Root's second century current tour. Notably, he had not scored Test century in Australia in the previous 14 matches played there before this series. Steering day 2 on 72 not out, 35-year-old battled through the morning session, helping England reach in 272 for 5. He held 11 boundaries and confidently played against the Australian bowling attack, which included Michael Stark, Scott Boland and Cameron Green, Michael Nesser prior to the tour. Root never scored the international century Australia. They changed earlier in the series when they scored an unbeaten 138 in the Brisbane Day-Night Test. His century in Sydney, first ever red ball match in the Sydney Cricket Ground, underscoring the increasing impact of the series as unfold. The state is currently under the grip of a cold wave, compounded by the dense fog creating hazardous condition. This reduced visibility due to the thick fog is leading to an increasing accident. The Meteorological Department forecasts that dense fog will continue to affect many parts of the state until January 7th. The department specially anticipates densest fog will observe in the Jajpur-Nayagarh district. Furthermore, a dip in night temperature by 2 to 4 degrees Celsius is expected over the next 3 days. Meanwhile, the situation in Delhi remains critical. The capital city is grappling with severe air pollution, and simultaneously, the Indian Meteorological Department has issued orange alert for Delhi due to the dense fog. That's all for now. Stay tuned for more updates.